people out there who are still figuring themselves out in their lives and falling in love, having problems. Just very relatable character. Thank you. Thank you, Abhijit. Now we have the heroine of the film, Suzanne Barreto. The shoot was a lot of fun. Do you want to say it in Hindi? Yes. Yes, chalega. Okay. The shoot was a lot of fun. Hello. Shut down. Hello. It was a great experience. It was fun working with Avjeet and Kinshuk and everyone else on set. The director was amazing. Anusha was awesome. And it was overall a very good experience. And my character, she is like any other girl, a very confused girl, falls in love, and a lot happens after that, but I can't tell you guys. Yeah, they have to watch the film. Yeah, you have to watch the film to know what happens, and yeah, it was a lot of fun. Thank you. Hi, Kinshuk. How was your experience? 25 दिन आप उत्तराखंड में शूट कर रहे थे, so जरा बताएं फिल्म में कैसा रहा, आप फैमिली की तरह रह रहे थे, there's a female producer, डायरेक्टर के साथ कैसा था, आर्टिस्ट के साथ कैसा रहा, थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस बताया. मेरा रियल नेम अभिजीत है एंड मेरा कैरेक्टर नेम विक्रम है एंड विक्रम इज़ अ प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म. ही इज़ अ वेरी relatable person, I think, but no, I mean not that much. Also, you'll find that out later. Not that much also. But it's a very nice story. I mean, he's got a really nice. He's a nice person in general. Just life happens to the character, and he just shifts. And लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लोगों के साथ. ऐसा देख के आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें लोगों के साथ हो जाती हैं जिससे वो फ्लिप कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए. पर ऐसा है. और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी ऑल्सो बिटवीन मी एंड उदिता, विक्रम एंड उदिता. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. द सॉन्ग्स ऑफ द फिल्म आर ऑल्सो वेरी नाइस. आप बताइए मैडम, आपका नाम है? मेरा उदिता. मेरा नाम कृसान है और मेरे कैरेक्टर का नाम उदिता है. एंड so Udita is a very ambitious girl, and she has like a lot of dreams that she wants to make true, and she would do anything to do that, because that's what she's wanted to do her entire life. And she falls in love with Vikram, and they have a very cute love story, and she's best friends with Simran, and Simran is dating Vansh. And the entire story is very beautifully put together. The script is really nice. We have done a great job, all of us. And yeah, it would be great if you guys watch it. अमारिस का मतलब क्या होता है? What is the meaning of अमारिस? The meaning of it is a gift from God, which is something that we all think it was. We shot this in the lockdown in Rishikesh, and we all had a great time. There were ups and downs. There were many, on the first day of shoot, we figured that, we weren't getting the same location the next day, and there was it was all crazy. But then I looked at Avjeet and I was like, chill, everything will be fine. And then the next day, everything got sorted. But yeah, there's a lot of heart that has gone into it, and we're all this is our first movie. Yes, first film. For the producer, for the you've not done a film now. No. For the actors. So yeah. It's something very big for us, and it would be great if you guys go and watch it, because we put our full heart into it. As you said, the shoot is done in Rishikesh, right? So what was your experience? Will you like to share any of your moments? It was great being in Rishikesh right after the lockdown, because we were all caged at home. So that was amazing. It's a beautiful place. There was this one song, Mashallah, that we were shooting right at the Ganga, and it was in the middle of the night. I was wearing a tiny dress, and we had to and there was wind blowing from both sides, and it was 10 degrees, and we're both shaking. But it was so much fun. Just it killed us, but it was just great. It turned out amazing. It looks great. The film looks amazing. We all look amazing. So
what you would like to say? How was your experience? My experience, as she just mentioned, like, we were just out of the lockdown, and then traveling all the way to Rishikesh, where it's visually very beautiful. Plus, it was nice. The weather was amazing, as she said. It was chilly, and then we had to not wear warm clothes while shooting, so we were all shivering. So that was, I think, that's one memory that all of us share. We were about all the film. shivering. Yeah, and as she mentioned, there were a lot of ups and downs, and when it's your first project, like, it's your baby, so you put your heart and soul into it, and whatever the obstacles might come in between, like, you overcome it, and finally, I think now on 27th of May, it's coming to the theaters. As masses like always look for the film, what is the interesting part? So what is the interesting part that people should go and see this? I think it is a slice of life, and it is the story of three young or two couples basically, or four young individuals having their own ambitions, their aspirations, and हर किसी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है या चाहता है कि मेरी ज़िंदगी इस तरह से हो, अपने पार्टनर्स को लेकर एक्सपेक्टेशंस होते हैं. सो इसी का एक अमालगमेशन आई थिंक इज़ अमेरिस. 27 मई को बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है. सिर्फ एक ही सवाल करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा. जी. लगभग 8 से ज़्यादा फिल्म रिलीज हो रही है. बहुत सारी फिल्म ऐसी होती हैं क्योंकि हर वर्ष 1000 फिल्मों की मुहूर्त होते हैं, जिसमें से 100 फिल्म मुश्किल से रिलीज होती है. 27 मई को बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है, और सिर्फ बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है जो हीरो के गांव में रिलीज होती है, एक सिनेमा घर, एक हीरो उनके यहाँ रिलीज हो रही है, झांकी हीरो रहने वाले. सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, आपकी फिल्म कितने सिनेमा घर में रिलीज हो रही है? सर ये चीज़ तो आप जो क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, आप उनसे एक बार पूछें तो उनको बेटर वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे आपको. हमें एक्चुअली पर इट्स अ पैन इंडिया रिलीज सर, ये सिर्फ मतलब पैन इंडिया रिलीज फॉर श्योर. नियन, जैसे आपने कहा कि 1000 फिल्मों का मुहूर्त होता है, 100 बनती है, तो आई थिंक एटलीस्ट हम इन 100 में तो पहुंच गए कि एटलीस्ट कंप्लीट हुई है और थिएटर्स तक जा रही है. तो आई थिंक ये एक फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ी बात है. हीरो के गांव और हीरो नहीं के गांव. एग्जैक्टली, बट आई थिंक ये फर्स्ट गाँव चीज़ is एक India, अचीवमेंट यार. है, एक अपने आप में अचीवमेंट है. एंड अब देखते हैं कि कहाँ कितने थिएटर्स में रिलीज़ होती है, कितने लोगों को पसंद आती है. इनिशियली प्लान था कि सिर्फ ऑनलाइन ले जाए, बट एज थिएटर्स खुल चुके हैं तो एक अटेम्प्ट है कि हम थिएटर्स तक भी ले जाए, सिर्फ ऑनलाइन ना लेते जाते हुए थिएटर्स पे भी ले जाए. As we had a doctor producer, now just now she spoke. So how was all of yours experience with her? Oh! I think she's the sweetest producer that we have met, like, Huh? नहीं? When I first met her, I was so scared of her. I didn't talk to her for 2 days. She talks very less. Yeah, less. But when just she starts talking, to the I think point. she talks. In the start, then when you get to know her, she's the sweetest. She's amazing. Very sweet. She made sure we're all very comfortable and it all went very smooth. Yeah, and she gets her stuff done even though she's sweet. Yeah. So lastly, any message to all the viewers who will be watching? This is a love story gone wild. Yeah. So basically, just go sit back, enjoy the love story of these two young couples, and just have fun. Thank you. They want to ask you questions. एक्चुअली मैं काफ़ी देर से सुन रही हूँ. एवरीबडी speaks about me as like a female producer, but I think I'm just a producer. It's the gender is irrelevant to it, that fact, right? And I have grown with the film, and it has taught me a lot about film industry and how to get a film made. And now we're getting to a point कि अब बन गई है, तो we're getting कि how does it get to the audience जिनके लिए बनाई गई है film. कैसे आपने आर्टिस्ट का सिलेक्शन कैसे किया? I think it was very okay. So well, Krizan, I think I used to watch her earlier in her shows also, and it was one of my favorites at that time. ये है आशिकी, right? Yeah. कैसी है आशिकी? Yes. So at that time I used to love that show, and from there I always had that liking to her. And when the director or the team was showing us कि ये options हैं for the female lead, so I was like no, we should go for Krizan.
and there was no question or debate about it. They was just like done. And for Kinshuk, yes, I'm sure he's heard it a million trillion times, but it was the shakalaka boom boom that was like engraved in our heart, and I'm sure it is of every kid who was in the 90s. Yeah, for sure. So when I met him the first time, I told him ki, you're the first young guy who I can look up to and say that, I've been a fan of you since I was a kid. And he's still young, right? So that's his achievement he started working so early, so that's why. We loved his show, we loved him then, we do like him now. So you want a music director, Yeah. lyrics writer, and Yeah. singer also. Yeah. Tell us something about that. Well, I guess my first passion was music only. The lockdown had a lot to teach to all of us, and मेरा रुझाव आर्ट की तरफ उसी टाइम बढ़ा क्योंकि फ्री टाइम में इंसान क्या करता है राइट बट जब मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे बढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि there was a real heart in it, and तो मैंने पहले कुछ गाने लिखे, कुछ गाने प्रोड्यूस, कुछ गाने हैं भी जो अभी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, बट जो इस फिल्म की शुरुआत हुई वो भी उस गाने से ही हुई जो मैंने उस टाइम पे लिखा था. तो जब मैं वो गाना हम लोग वी वर जस्ट लाइक अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर सिटिंग एंड टॉकिंग एंड मैंने ये गाना गाया तो उन्होंने कहा यार मेरे दिमाग में एक स्टोरी है दैट फिट्स वेल विद दिस सॉन्ग. तो मैंने कहा वो स्टोरी क्या है. देन आई हर्ड द स्टोरी एंड आई वाज लाइक perfect. I fell in love with the story. Then we were like, okay, like we're making a movie now. And she's amazing. If you hear the songs, you will fall in love with it. She's too good. The songs are the heart of the film basically. आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ये चीज़ के. सुन दो, बहुत जल्दी रिलीज भी होने वाले हैं. ऊपर गाया है, थोड़ा सा घूम रहा है. बहुत जल्दी रिलीज हो रहे हैं 15th में, just the 15th of next month. You know a line or a tune? Okay, or tune? Your favorite tune, huh? Okay. Just Do you want the love song tune or do you want the heartbreak tune? Heartbreak. Heartbreak? Yeah, everyone loves heartbreak these days. Okay. Okay, well, this is like the main song. Everyone quiet. I think ये लाइन वो है जो हर यंग कपल एक दूसरे को बोलते हैं जब दिल टूटता है तो. करो ना वादा वो निभा ना सकते जो, करो ना वादा वो निभा ना सकते जो. Title of this Yeah. उसके बारे में clarify कीजिए title. We wanted it to be unique, that's why. We wanted a Greek title. We wanted all of you to ask this question 20 times. Is the name of the character or something? It is very significant in the film. It's not like totally like कि गाना film कुछ और है और नाम कुछ और है. It is very significant in the film, but we want you to find that out yourself. But the meaning of AMARIS is a gift of God, and it is a gift of God for all of us. And हम सबके बहुत ही काम ही नहीं, प्रोफेशन ही हमारे दिल जुड़े हैं इस फिल्म के साथ. हमारी emotions, हमारे we did just whatever it took to make it. Whatever came our way, we were like, no, nothing's gonna get in our way. Talking about the casting, on what basis you did the casting of this? What are the basis of casting? Well, love. I love them. No. मैडम आपने जो अभी गाना गाया जी. वो बहुत अच्छा लगा. ऐसा लग रहा है जैसे आप साउंड में गा. किसमें गाया? इसके लिए जो आने वाले और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिंगर बनना चाहते हैं जी. उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि आपको ये बिल्कुल, करना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि द डिफरेंस बिटवीन पीपल हु आर सिंगर एंड पीपल हु सिंग हिंदी में, वेल. मैडम हिंदी में. अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल राइट. हाँ, तो जो भी लोग हैं जो एस्पायर करते हैं टू बी अ सिंगर या उनको लगता है कि वो अच्छा गाते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि एक सिंगर में और एक ऐसे पर्सन में जिसके पास पोटेंशियल है और वो गाते अच्छे हैं, वो फील करते हैं कि उनकी आवाज़ अच्छी है, उनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि उन सिंगरों ने अपने आप में बिलीव किया और गाना बनाया और आउट देयर लोगों को सुनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे डाला, तो वो सिंगर बन जाते हैं. वही डिफरेंस है और कुछ नहीं है. तो एवरीवन शुड बिलीव इन देमसेल्व्स कि अगर उनको लगता है कि अच्छा गा सकते हैं, वो अगर नहीं भी गाते, किसी को नहीं लगता कि वो अच्छा गाते हैं एक्चुअली, बताओ तो. जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड गेट आउट देयर, एंड जो भी है लाइक
at least put it in, manifest it, like, you know, put it into existence, then let others इसी decide. फिल्म का एक गाना और गुनगुना है। You're not gonna wait till 15th, huh? Alright, so sad song, love song. Everyone wants to. Everybody is sad here. Everybody is heartbroken, kya? Okay. ठीक है, okay. Yes. खुद गर्ज मेरा हो यार मेरा खुद गर्ज हुआ यार मेरा हो यार मेरा खुद गर्ज हुआ. सो हर एक को ऐसा लगता है कि उनका पार्टनर मतलब ही हो जाते हैं, तो उनके लिए गाना है कि यार मेरा खुद गर्ज हुआ. फाइव सॉन्ग्स रिलीज़ के लिए. एक्चुअली प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, बट वी वांटेड दिस टू बी अ पोस्टल लॉन्च एंड द रिलीज डेट. सॉन्ग रिलीज़ के लिए वी आर गोना बी डूइंग अनदर फिल्म रिलीज. इट्स ऑन 27th of next month, 27th. वो प्लानिंग पैन इंडिया, बट मेट्रोपॉलिटन मुंबई दिल्ली पे मेन फोकस है, तो आपको आपके नियरर थिएटर पे डेफिनेटली मेरे देखने को मिलेंगी. एंड कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स की हमने क्योंकि अजय जी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपनी पूरी 100% मेहनत लगा रहे हैं उसको टू गिव इट द बेस्ट प्लेस, ताकि ये सब तक पहुँचे और अच्छे से पहुँचे. क्योंकि सब जो भी इस टीम में जुड़े हुए हैं कोई भी प्रोफेशनली नहीं, मुझे लगता है सब दिल से जुड़े हुए हैं, तो अपना बेस्ट कर रहे हैं. बट इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फिल्म को ढूंढने में. जब ये रिलीज़ होगी उसके बाद आप लोग को कोई आपके आसपास के थिएटर में ज़रूर मिलेगा कि आप जाके इसको देख पाएँ. OTT भी एक अच्छा ऑप्शन है, उस पर क्यों नहीं जा रहे? OTT पे बिल्कुल जाएंगे, रिलीज़ होने के बाद भी करेंगे, क्योंकि थिएटर पे हर एक फिल्म का एक दौरान एक टाइम फ्रेम होता है जिस तक वो होती है थिएटर पे. बट आफ्टर दैट तो OTT पे होगी, ताकि लोग जो लोग थिएटर पे नहीं देख पाए, वो मिस कर चुके हैं, उनके पास वो अपने कन्वीनियंस पे देख पाए.